Pakistan. These divides often stem from ideological, ethnic and religious differences, compounded by historical tensions and socio-economic inequalities. So this theme today of bridging the gap and the polarization of political stability is very much to be a part which we have to follow. Yet amid this turbulence, the youth of Pakistan possesses तलबा के लिए बहुत जरूरी अवसर हैं। जब नौजवान अपने मुल्क और कम्युनिटी के साथ वाबस्ता होते हैं तो इनमें फख्र और एहसास जिम्मेदारी पैदा होता है। यही कौमी यकजहती और इत्तेहाद, मस्बत और क्रिटिकल सोच, मसाइल के हल और ताउन को फरोग देकर मुस्तकबिल के रहनुमाओं की तश्कील भी करता है। नौजवान इन इक़दार को अपनाकर अपनी कौम के मुस्तकबिल को यकीनी बना सकते हैं। आज हमारे लिए बाइस इज्जत है कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सेनेटर जनाब अनवारुल-हक काकर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जनाब अनवारुल-हक काकर साहब ने 2023 में मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म की हैसियत से अपने ओहदे का हल उठाया। आप 2018 से 24 तक सूबा बलूचिस्तान से आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए। सेनेटर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने के दौरान आप सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानियों और इंसानी वसाइल की तरक्की की कमेटियों के चेयरमैन रहे। आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, फाइनेंस और रेवेन्यू, खारजा अमूर और साइंस और टेक्नोलॉजी कमेटियों के भी फाल रुकन रहे। पाकिस्तान बिलखुसूस सूबा बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के बारे में गहरी बसीरत रखते हुए आप कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी और पॉलिसी साजी के प्लेटफॉर्म्स पर अपना नुक्ता नज़र पेश करते रहे, जिनमें पाकिस्तान की आला जामियात के तलबा और उस्तादा के साथ सेशंस, मुल्क के पॉलिसी साजों के लिए सेशंस, मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत को ब्रीफिंग के साथ साथ कौमी मीडिया के सियासी टॉक शोज में शमूलियत भी शामिल है। आज आप तलबा तालिबात और उस्तादा से खुसूसी किताब के लिए जामा कराची में तशरीफ लाए हैं। मैं गुजारिश करूंगी जनाब अनवारुल-हक काकर साहब से कि वो किताब के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन का, थॉट प्रोसेस में स्टिमुलेशन का बायस होता है। मैं यकीन जानिए यहाँ सिखाने नहीं बल्कि सीखने आता हूँ, और जितना मैं चैलेंज्ड होता हूँ उतना ही अपने लिए मुफीद उसको समझता हूँ, उसका इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश भी करता हूँ। तो आज भी मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, टू हैव अ हेल्दी डिस्कोर्स, जो कि किसी भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की बुनियाद है। जो बात मंसूब है दुरुस्त है, नीयत में बात बड़ी अच्छी है, और वो ये है कि सवाल किसी से उलझने के लिए नहीं, समझने के लिए। तो अगर उलझना मकसद हो तो फिर तो उसका कोई हद नहीं। मैं कुछ कहूँगा आप कुछ और कहेंगे, मैं उसका जवाब दूँगा कुछ और कहेंगे। तो उलझना जो है ना एक विशियस साइकिल है। समझने के लिए ना पहले आपको अपने अंदर खुद इंट्रोस्पेक्शन करनी होती है कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि सारे और में तालियाँ बजें तो फिर उलझने वाले साथ, और अगर आप खुद चाहते हैं कि बात कोई मसरत अंदाज में आगे बढ़े तो फिर समझने वाली बात कीजिए। चॉइस इज योर्स। मुझे अपने एनवायरनमेंट में पीपल विद whom I used to interact, they would tell me that Pakistan is an artificial country, and it does not have any historical continuation. And historical countries are like France and Germany, Italy, Spain, so on and so forth. Iran में बड़ा बस करो। तो जो हम बड़े होते गए, ये एक एहसास कमतरी में, कौमी एहसास कमतरी में लोगों को मुब्तला करने की मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी। और बहुत सारे लोग बशमूल मैं अपने आप को इसमें रखूँगा कि we succumbed to this idea. We thought this was true. We have just been created for a few years, और हमारे यहाँ जो सब नेशनलिटीज हैं। Now, when you say verbal communication should be allowed, I just heard the chairman talk about a moral compass. So verbal communication can be civic, verbal communication can be decent, verbal communication can be acceptable to the religious
all secular values, both. But there are verbal communications which is curtailed in liberal societies, in open societies, where probably the secularism is at its peak, at its zenith. From the sophists to Plato and Aristotle, well, I missed the Socrates, but this was old line. And the Romans were engineers, they were the builders, they were the actual workers. And that's how they provided a foundation to the whole Western civilization on which it stands today. So this is a journey of more or less 5,000 years. And during that journey, they have developed different political systems, governance systems, economic systems. They started from building the city-states to creating empires, the Roman Empire, the Greek. The case study is Europe. Constantinople, when he brought Christianity to Europe, Rome and present-day Italy, it took 2 millennia for Europe to have Christianity as part of its identity. But it's all Christian now. Christianity was not revealed to the European continent of the West. They adopted it, and then there was a strong vying contest between the pagans, like Vikings, and the monotheist Christians. Just like the pagans of Makkah and the monotheists of Medina, Yasrib. So that sort of contest has occurred in the history on the European continent. And the pagans in that case were Vikings, mostly. So bringing it back over here, Ajam Hanuz Nadanat Ramuz-e-Din Wallah. That Ajams still does not appreciate the hints of Deen. He is not said here the orders of the Deen, the explicit commandment of Deen. He's chosen the word Ramuz, which is insinuation, hints. So you get divine hint and then you apply your own mind. And by receiving those signals and on the application of your mind, you design something new. You design something unique. So Ajam Hanuz Nadanat Ramuz-e-Din Wallah. Ziddeh ban Hussain Ahmad इंची नहीं हुई. उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन में आजकल की हमारी जनरेशन जो है थोड़ी सी फारसी से नाबलद है. कितने लोगों को फारसी आती है? So you are in minority. And Ziddeh ban Hussain Ahmad इंची भूला चली है. उन्होंने, मैं इसका मफहूम बयान कर देता हूँ कि आप सरे मेंबर रसूल बैठ के क्या कह रहे हैं. क्यों सरे मेंबर रसूल उनको कहा कि एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि उलमा वो नबूवत की लेगेसी को कैरी करेंगे. उसको बुनियाद बना के उन्होंने कहा कि उस मेंबर पे बैठ के आप कह क्या रहे हैं. मैं हैरान हूँ भूल चुकी. और मिल्लत को वतन के साथ जोड़ रहे हैं. जो सोशलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा था, तस्करा कर रहा था, कि वो रेफर कर रहे हैं कि दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन. मुस्तफा बिरसाम के दीन हमर वस्त. Try to appreciate मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हमर के वही दीन है. दीन क्या है? दीन मोहम्मद. We haven't seen God. We haven't experienced God. We haven't heard of God. We only knew Muhammad. We experienced Muhammad. There was an emotional and social experiment of prophethood's institution. आप पहले उसको याद करें
जो पहली मरतबा उन्होंने सबको बुलाया, क्या कहा? ये कहा कि चलो सारे इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह को वाहिद जानो, एक जानो, यकता जानो, यगाना जानो, कुछ भी नहीं। मैं अगर तुम्हें कहूँ कि उस तरफ से एक लश्कर आ रहा है, क्या मानो? Yes. So his credibility was there. The most credible voice of his time and times to come. He became the emblem of truth. He came with a claim of truth. Haqqaniyan, haqq. And that was entirely on the basis of his credibility. And later on, he brought that idea of monotheism and followed by everything. Therefore, for my question is from your speech. You said earlier that the youth are basically engaged in making certain hue and cry and criticism on certain sectors, organizations. But don't you think that it is one thing which is imposed from certain social and political experiment which we did earlier, and sometimes we face कि जी ये हमें नहीं करना चाहिए था, and sometimes we feel कि जी जो कुछ हमने किया we are convinced with it. One thing this. The second thing which I need to address that, and I need your view also, that in society we have certain realistic conflict, and whenever we are addressing the realistic conflict, we have one narrative which is coming from the opposite side. And when we are rejecting that narrative, we need to make another thing which is the counter narrative, and that is supposed to be most strongest or most जैसे कहें बड़ा logical and very reasonable in order to reject that thing. The counter narrative need to be more strong than the narrative. So we didn't work on it academically or so, politically or intellectually. Neither delusional nor am I a liar. There is a civil-military imbalance in this country. The question more important is, why is it so? Why do we need to inquire and understand that this imbalance, and which by the way is in favor of military, it's not in the favor of civilian arrangement. So why is it so? The issue is, in my humble opinion, and I'm quite open to criticism, I can be wrong on that, but this is what I genuinely believe in. For the last 7 decades, it's not the issue of post-2022. The civil-military relations has a history of 7 decades. There is 4 time interventions, we have taken over the government forcefully, a putsch or a coup d'etat has occurred in this country, and then there is a quasi-indirect management of control accused towards those institutions, and that's how your governance is going ahead. पूरा कर देती हूँ। नौशीन मेरा नाम है, आईआर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। सर एक शेर ही से शुरू करते हैं। अपनी अपनी अना को भुलाया जा सकता था, शायद सारा शहर बचाया जा सकता था। बात को समझने की कोशिश की जा रही है और बहुत अच्छी आपकी नेकनियती की भी बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगी। आप बहुत एलिक्वेंट बात कर रहे थे, उसकी भी बहुत तारीफ करूँगी। अहम बात यही है कि डायलॉग शुरू होने चाहिए, इस नेकनियती के साथ शुरू होने चाहिए कि हमें इस मुल्क को बचाना है, तो उसमें हम सब साथ हैं आपके। बहुत शुक्रिया। कर सकते हैं। One is territorial sovereignty, loyalty to the land, not to some supranational element. Collective security, where everyone has to contribute. And the third and the last, जो former Caretaker Prime Minister साहब ने कहा, the balance of power. That were the 3 principles we can see from the Treaty of Westphalia. आपने बात की टैक्स पेमेंट के हवाले से, to read Article of Confederation. बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, मिसिंग पर्सन का क्या इशू है. So we have to champion the principles of human rights, and the rule of law is very important.
पाकिस्तान की तारीख को सही पढ़ने की जरूरत है। And I start way back more elementary reform. We talk about the federating units. I talk about Qaeda Muhammad Jinnah, 14 points. We talk about the federation. I talk about Government of India Act 1935, which provided the foundation for Pakistan. The Pakistan was created not only in the name of Islam. I think the basic was to create a federation. And we can have a nation building in Pakistan on the basis of a strong federation. Believe in diversity. The diversity is beauty. जब हम बात करते हैं कि जी बलूचिस्तान में इतने आइडेंटिटी की बात करते हैं, there is nothing wrong to have sub-national identity. But 3 दफा जब आप पढ़ते नहीं खाना, proud to be Pakistani. This is my identity. उसके बगैर we don't have any role in terms of चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो. अक्सर हम उधर रहमान की बात आपने की, we tend to be very critical to our military establishment, but you have to realize the geopolitics of Pakistan, the geoeconomics of Pakistan, कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जो फोर्सेस बैठी हुई हैं, जो पाकिस्तान को डिसमेंटल करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं चाहती, जो पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं चाहती. मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा, कोई ऐसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं देखी जिसकी इंगेजमेंट इस लेवल पे हो. केयरटेकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से वैसे ही लेवली आपने कहा जी एकेडमियां क्या कर रही हैं. आई एक्सेप्ट इट, हमें बहुत कुछ करना चाहिए, पर तारीख में आपने कहा कि हमने रूसो पैदा नहीं किया. तो मेरा एक हम्बल सा सबमिशन है, इब्राहिम लिंकन कितने पैदा किए, जॉर्ज वॉशिंगटन कितने पैदा किए, नेल्सन मंडेला कितने पैदा किए, मदर टेरेसा और भी नाम मुझे, but I want to be very brief. So मैं सिर्फ उधर फिंगर पॉइंट नहीं करूँ. In Caribbean, definitely we have to improve the quality of education, and we must appreciate. मैं खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट का, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं सिंध गवर्नमेंट का चैंपियन होता हूँ, but my appreciate is to the Sindh government for supporting universities. जो सिंध की प्रोविंसेस के जो यूनिवर्सिटीज को जितना उन्होंने सपोर्ट किया है, किसी सूबे ने सपोर्ट नहीं किया. And I must appreciate the role of Chairman Higher Education Commission, Tariq Rafi Saab, playing a pivotal role in getting all these funds for the universities of province. तो हमें मेहनत करनी चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए. I want to conclude with कि हम अपने नौजवानों को क्या देना चाहते हैं. I want to read from a text. Martin Luther King the Jr. He wrote a book, I Have a Dream. The book is I Have a Dream. उसने कहा, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. The time is always right to do what is right. Thank you, ladies and gentlemen.